दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। हम ख्याल करते हैं ऑफकोर्स हम सिक्योरिटी लगा दें, लेकिन बस आज हमारी सिक्योरिटी सारी ऑन नहीं हुई थी। बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आज के सेशन में बेटा हम मॉडल वर्ब्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और मॉडल वर्ब्स याद रखें, मॉडल वर्ब्स आपकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 5 चैप्टर्स होते हैं: ऑब्लिगेशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। अब जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो देखिए आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आपको समझ आएंगे। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। आपका एग्जाम है अगले महीने, अब आपका अगले हफ्ते ही एग्जाम दे दो। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको लाजमन मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। है ये भी जिम्मेदारी, ये भी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बारे में मैं क्या लिखूंगा? इसके बारे में मैं लिखूंगा इट्स स्ट्रोंगर। ये स्ट्रोंगर है, stronger than should. You must work hard. You must listen to me. You must listen to me. You must come on time. You must wake up early in the morning. You must, you must invite Sarah. आपको लाजमन सारा को दावत देनी चाहिए। You must स्पीक इन इंग्लिश। जब आप शुड और मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप जिम्मेदारी की बात करते हैं, फर्ज की बात करते हैं, ठीक है ना। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप शुड और मस्ट का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं, समथिंग इज अ गुड आइडिया एंड समथिंग इज अ बैड आइडिया। यू शुड समथिंग इज अ गुड आइडिया मीन्स यू शुड गो बाय ट्रेन। मुझे लाहौर जाने में कैसे जाऊं? सर यू शुड गो बाय ट्रेन। You should go by train. It's a good idea. लेकिन बेस्ट आइडिया क्या होगा? बेस्ट आइडिया होगा यू मस्ट गो बाय ट्रेन। यू मस्ट गो बाय एयर। दिस इज द बेस्ट आइडिया, यू मस्ट गो बाय एयर। यू मस्ट गो बाय ट्रेन। गुड आइडिया, मजा आएगा सर, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा एक एनवायरनमेंट बना रहेगा। सर आप अकेले जा रहे हैं और आपको गर्मी भी ज्यादा और आपकी मीटिंग है, सर यू मस्ट गो बाय एयर। तो कभी कभार हम ये देखते हैं इस बात, जब हम शुड और मस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि भाई यहाँ पर गुड क्या है और बेस्ट क्या है। तो हमने देखा इट्स अ गुड वन, ये आपके लिए गुड है। और ये क्या है आपके लिए? सर ये बेस्ट है। अम्मी ने 2 तस्वीरें दिखाई, बेटा अब फैसला कर लो, कब तक शादी नहीं करोगे? फिर अम्मा ने 2 तस्वीरें दिखाई, समरी सुनिएगा। पिक्चर ए, she is 22 years old. She has done BCom, and she has one younger sister married, one elder sister married, one younger sister unmarried, one elder brother married, one younger brother unmarried, father government servant, mother housewife. Live, she lives in a apartment, uh, and that's a not a rental apartment. Father has purchased recently. They live in their own house. 120 yards. अब दूसरा सुनिएगा, पिक्चर 2। One elder brother only lives in Australia, working, studying. Father has a travel agency, and he has been doing that business for 20 years. And mother is also a social media marketer. She is also working on AI, and she's also working in different markets of USA and UK. She also earns a handsome amount. They live in Bahria town. They have their own villa, low by. And she is studying in Zabist. She is currently doing MBA finance. सर अब आप देखें, दोनों मैंने पार्टियों के बारे में आपको बता दिया। सर यू शुड मैरी, पिक्चर ए, गुड आइडिया।
सर यू मस्ट मैरी पिक्चर भी लाइफ सेट हो जाएगी सर आपकी, पढ़ाना डालना नहीं पड़ेगा आपको, आप उनके बिजनेस में हाथ बढ़ा दीजिएगा। हाँ, इट्स अ बेस्ट आइडिया। तो अब देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम जिम्मेदारी से ज्यादा गुड और बेस्ट को देख रहे होते हैं। समझ आ गई बात? गुड और बेस्ट। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। मॉडल्स के अंदर एक बात और भी है, देखें जब मैं मॉडल्स की बात कर रहा हूं ना, मैंने लिखा यू शुडेंट, नहीं देखें, नहीं 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 बेटा नहीं। ठीक है बेटा, मैंने माना, यू यू शुडेंट से लाइक दिस, यू शुडेंट से लाइक दिस, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं बेटा। ठीक है बेटा, मान लिया उसने तुम्हें बुरा भला कहा, नहीं बेटा, बैड आइडिया, बुरी बात है बेटा, देखो, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। यू शुडेंट अब्यूज बेटा, यू शुडेंट अब्यूज, यू शुड नॉट हर्ट एनीवन, यू शुड नॉट, you should not, you shouldn't, you shouldn't, you shouldn't drive fast, you shouldn't drive fast, you shouldn't go alone, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। देखो रात के 12 बज रहे हैं और तुम पैसे निकलवाने जा रही हो एटीएम, और वो भी अकेली, वो भी नई गाड़ी के अंदर, नहीं, देखो नहीं, यू शुडेंट, इट्स अ बैड आइडिया यार, रात को तुम्हें पता है आजकल के हालात कैसे हैं। यू शुडेंट गो अलोन, you shouldn't withdraw money at 12 midnight alone, and you are that too in a brand new car you are going, no, you shouldn't do like this, you shouldn't। आप देखिए shouldn't का वर्ड आप जब इस्तेमाल करते हैं जब बैड आइडिया है, लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा you mustn't, you mustn't meet Sarah, you mustn't, mustn't नहीं पढ़ते इसको, mustn't पढ़ते हैं, mustn't, you mustn't meet Sarah, तुम्हें हरगिज सारा से नहीं मिलना चाहिए। उसके भाई ने आकर आपको धमकी दे दी, यू मस्ट मीट सारा। भाई अपनी बहन को रोको ना, वो मिलने आती है, मैं थोड़ी नहीं जाता, मैं तो अपने घर पे रहता हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो अपनी बहन को। यू मस्ट मीट सारा, प्रोहिबिट, यू मस्ट स्मोक, कोई चीज आपके लिए ममनू है, न नाजायज है, हराम है, प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल, अनलॉफुल, नॉट अलाउड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, यू मस्टंट पार्क योर कार हियर, नॉट अलाउड, अनलॉफुल, प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। जो ग्रामर बुक्स में लिखते हैं मैंने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, समथिंग इज प्रोहिबिटेड, समथिंग इज अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब हराम होता है, अनलॉफुल, समथिंग इज नॉट अलाउड। आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए और सिगरेट पी रहे हैं, तो वहां पर एक सिस्टर आई, you mustn't smoke here, you mustn't smoke here। आप कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हैं, वहां पर वो कह रहे हैं you mustn't park your car here। मैं एक दफा, मुझे याद है कई साल पुरानी बात है, मैं आगा खान गया, तो वहां पर कुछ ग्रासी एरिया था, तो हम वहां पर हम दोस्त थे, हम छोटे थे बहुत, तो हम वहां अपना भागने लगे और खेलने लगे, तो उन्होंने कहा you mustn't play here, if you want to sit, you want to play, go there। वहां ग्रासी एरिया था, वो उनको वहां ना वो खूबसूरती के लिए उन्होंने घास लगाई हुई थी। नॉट अलाउड टू सिट, नॉट अलाउड टू वॉक, नॉट अलाउड टू लाई, सो यू मस्टंट। जब कोई चीज आपको किसी को मना करनी हो, आप मस्टंट का इस्तेमाल, यू मस्टंट डू दिस। अच्छा एक बात और बता दूं, देखो मस्ट इज अ, मेरे अल्फाज लिखते रहा करो बेटा अपने पास नोटबुक में, नोट्स तो मैंने तुम लोगों को दे दिया बहुत अच्छे से। अब मेरी बातें सुन लो जो आपको नोट्स में नहीं मिलती है, ठीक है ना? मेरी बातें बस मेरे पास ही होती हैं, मेरे दिमाग में जो कुछ है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यू मस्ट डू इट, आप कभी ये जुमला मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखे, मस्ट इज अ बॉसी वर्ड, ये बॉस इस्तेमाल करता है, ये वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपसे ओहदे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, डेजिग्नेशन में बड़े हैं, सीनियर हैं। यू मस्ट डू इट, यू मस्ट टाइप दिस लेटर अगेन, ये आपका बॉस बोल सकता है, आपकी वालिदा आपको बोल सकती है यू मस्ट स्लीप, यू मस्ट लिसन टू मी। लेकिन आप अपनी अम्मा को नहीं बोल सकते यू मस्ट, मम्मा यू मस्ट लिसन टू मी। आजकल के बच्चों को अल्लाह पाक ने एक हिदायत दे, मम्मा यू मस्ट लिसन टू मी, नहीं, वालदा से ऐसे बात नहीं करते, माँ बाप से ऐसे बात नहीं की जाती। यू मस्ट, आप शुड इस्तेमाल करें, पोलाइट वे में बात करें, उफ तक ना कहें। यू, मम्मा यू शुड लिसन टू मी, हाँ जी बेटा बोले, मम्मा यू शुड अलाउ मी
to go with my friends for iftar. No, beta, no. I can't allow you. If you want to go, take Hamza with you as well. No, mom, not at all. So, okay, then you are not allowed to go. Take Hamza. What's the problem? Okay, mom, I will take him. But he will stay out. He will stay away from my friends. Of course, what will he do? आ गई बात समझ? तो आपसे जो लोग सीनियर है उस पर आप मस्ट इस्तेमाल ना करें। आप अपने से सीनियर्स पे मस्टंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे यू शुड नॉट। आप मुझे जैसे अक्सर बच्चे मैसेजेस करते हैं तो कहते हैं सर यू शुड नॉट से लाइक दिस। आप यूं कह सकते हैं सर यू शुडंट बिहेव लाइक दिस। ये नहीं कह सकते यू मस्टंट बिहेव। मैं बोलूंगा चलो बेटा कल से मत आना, यू मस्टंट बिहेव। वैसे तो कोई बदतमीजी करता नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी तालीम कम होती है ना, वो इस तरह की बातें कर देते हैं, तो हम उनका बुरा नहीं मानते। व्हाट्सएप के ऊपर एक अच्छा ऑप्शन है ब्लॉक। ब्लॉक करें, जिंदगी खुश रहेगी आपकी। किसी से ज्यादा बहस ना करें। डोंट आर्ग्यू विद एनीवन। ये मेरी आपको एडवाइस है। यू शुड नॉट आर्ग्यू विद एनीवन। इफ समबडी इज टॉकिंग टू यू बैडली, ब्लॉक। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। लिव हैप्पी एंड लेट अस लिव हैप्पी। तो लोग कभी कहते हैं यार आपने ब्लॉक कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट यू, दैट्स ऑल। व्हाई आर यू टेकिंग इट पर्सनली? आपने ब्लॉक कर दिया। पता नहीं, शायद मेरे पास 2000 से ज्यादा लोग ब्लॉक हो चुके हैं मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन अब व्हाट्सएप ने खुद ही अनब्लॉक कर दिया उनको। तो आई सिंपली ब्लॉक, नॉट टू हर्ट एनीवन। सही है ना? इट्स अ गुड थिंग। आप किसी को का दिल ना दुखाए, तो दिल ना दुखाने का आसान तरीका है ब्लॉक कर दो। ठीक है? तो ब्लॉक करना कोई बुरी बात नहीं है। ब्लॉक करने से रिश्ते कायम रहते हैं। ये मेरी फिलॉसफी है। आपने ब्लॉक कर दिया, रिश्ता कायम रहेगा। चले, यू मस्टंट मीट सारा। यू मस्टंट मीट सारा। कुछ लोग जो फ्री के मैसेजेस करते हैं ना, जो हमें फ्री पढ़ाते हैं, उनको भी हम ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो भी नाराज ना हो। ठीक है ना? तो कहते हैं यार आपको बात करने की तमीज नहीं है। भाई हम तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो बात कर ही नहीं रहे, हमने तो ब्लॉक कर दिया। अल्लाह हाफिज, लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड लेट अस लिव हैप्पीली। फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई। चले, यू मस्टंट मीट सारा। यू मस्टंट मीट सारा मना है आपको। आप उसका भाई घर गया, यू मस्टंट मीट राजू। भाई आई विल कमिट सुसाइड इफ आई डोंट मीट राजू। मतलब बात यहां तक पहुंच गई है। भाई कह रहा है यू मस्टंट मीट राजू। तुम्हें हरगिज राजू से नहीं मिलना चाहिए। ही इज नॉट अ गुड पर्सन। भाई अच्छे तो आप भी नहीं है, तो आपसे भी तो मैं रोज हमारी मुलाकातें होती। शट अप। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। अब आप कोई नसीहत लेने जा रहे हैं। सर शुड आई वॉच यूट्यूब फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश? सर should I join SKH for improving my English? Should I join SKH spoken English online course? आज मेरी बातें ज्यादा है, इसलिए मैं आज आपको पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दे रहा, माजरत उसके लिए, क्योंकि मेरी बातें बहुत सारी है। शुड आई ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स? क्या मुझे SKH स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? शुड आई व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? आप कोई नसीहत लेना चाह रहे हैं, आप शुड का इस्तेमाल क्वेश्चन में कर सकते हैं। सर क्या मस्ट का इस्तेमाल क्वेश्चन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मैंने देखा नहीं है। इतना ज्यादा मैंने इसको इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। मस्ट आई वेयर मास्क? क्या जब ये कोविड चल रहा था उस वक्त ये जुमले चल रहे थे। मस्ट आई वेयर मास्क? क्या मुझे मास्क लाजमन पहनना चाहिए? मस्ट आई कीप आईडी कार्ड? मस्ट आई कीप आईडी कार्ड? वो तो कार्ड भी कंपलसरी कर दिया था ना कि आप वैक्सीनेशन का कार्ड भी अपने जेब में रखे घूमे। मस्ट आई कीप आईडी कार्ड? यस यू मस्ट। क्या ये बेहद जरूरी है कि मैं अपने साथ आईडी कार्ड रखूं? तो अब देखो, शुड अफर्मेटिव में भी आ रहा है, नेगेटिव में भी आ रहा है, क्वेश्चन में भी आ रहा है, और मस्ट भी नेगेटिव क्वेश्चन सब में आ रहा है। खत्म, टाटा बाय बाय। और ये हम बात कर रहे थे ऑब्लिगेशन की, और इसकी मीनिंग्स ये देता है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों। आ गई बात समझ? अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्टूडेंट्स की नॉलेज में किसी किस्म की कहीं पर जाए तो कमी नजर आए।
आप एक मेरा नोट लिख लीजिएगा, ये नोट करके मैं आपके सामने लिख देता हूँ। नोट्स में सारी सारी बातें आपको मिल जाएंगी बहुत डिटेल में। शुड इज इक्वल टू, हम शुड की जगह पर इसका एक और अल्टरनेटिव भी है, वो है ऑट टू। हम ऑट टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखो ये पहली मर्तबा सुना है मैंने अपनी कानों से, लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑगट, ये ऑट टू है। हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटा ऑट टू जो है वो फॉर्मल है, और फॉर्मल के साथ साथ जो वर्ड अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये लेस यूजुअल है। लेस यूजुअल का मतलब जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ नजर आएगा कि इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन देखो नॉलेज में होना चाहिए। अब अगर जहां तुमने शुड इस्तेमाल किया, यू ऑट टू वर्क हार्ड, यू ऑट टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। मैंने ऑट टू का इस्तेमाल पता है कहाँ देखा है? मैंने ऑट टू का इस्तेमाल ज्यादातर वो जो फिल्म्स के सबटाइटल्स आ रहे होते हैं ना, क्योंकि वो फॉर्मल राइटिंग्स होती हैं, वहां देखा है मैंने, वरना इसको रियल लाइफ में कभी सुना नहीं अपने कानों से। तो आप बस अपनी नॉलेज में रखेंगे, शुड इज इक्वल टू ऑट टू। यू शुड वर्क हार्ड, यू ऑट टू वर्क हार्ड। यू शुड नॉट वर्क हार्ड, यू ऑट नॉट टू वर्क हार्ड। ऑट के बाद नॉट लगेगा, शुड के जैसे मॉडल्स के बाद नॉट लगता है। यू ऑट नॉट टू वर्क हार्ड। आ गई बात समझ? क्लियर? अच्छा, एक बात और बता देता हूं, हम ये कॉमन है, ये कहलाता है मॉडल फ्रेज। क्या कहलाता है? मॉडल फ्रेज। बी सपोज टू, बी सपोज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बी सपोज, ये डा साउंड नहीं देता, ये टा साउंड देता है। बी सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी सपोज टू बराबर है किसके? बराबर है शुड के। और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने शायद ये बात आपने मेरे जबान से कभी सुनी हो, हम मॉडल वर्ब्स के बगैर भी इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसे वर्ड्स याद कर, ऐसे इडियम्स याद कर ले, ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन भी कहलाता है। इसको हम मॉडल फ्रेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कोई ऐसा इडियमेटिक एक्सप्रेशन, कोई ऐसा वर्ड ऑर्डर जो मॉडल को पैराफ्रेज कर दे, मॉडल को रिप्लेस कर दे, वो कहलाता है मॉडल फ्रेज। यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, सेम मीनिंग्स दे रहा है, कोई मीनिंग्स में जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं है। कोई आपसे कहे तब्दीली है तो आप उसे मेरे पास भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बहुत आसान अल्फाजों में मॉडल वर्ब समझा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड पे चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोई डेफिनेशंस के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ये सिर्फ इस्तेमाल करना है, ठीक है? अगर आपको इसकी बहुत डिटेल चाहिए, नोट्स में अवेलेबल है, उसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। यू आर, यू आर सपोज टू गो बाय ट्रेन, यू आर सपोज टू गो बाय ट्रेन। आपने देखा मैंने मॉडल से इसको, सर नेगेटिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यू आर नॉट सपोज टू से लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज टू से लाइक दिस, सेम मीनिंग्स। अब जो तुम लोगों को अच्छा लगे वो इस्तेमाल करो। सर क्या क्वेश्चन बन सकता है? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? एम आई सपोज टू, एम आई सपोज टू, एम आई सपोज टू, एम आई सपोज टू ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। आ गई बेटा बात समझ? am I supposed to join? Am I supposed to join SKH spoken English? What should I do? What should I do? What am I supposed to do? माजरत में आज आप लोगों को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहा, लेकिन मेरी बातें बहुत, मॉडल्स के अंदर ना डिटेल बहुत है। मैं एक बात बताकर आपसे बात करूं मेरे लिए मुमकिन नहीं है। व्हाट एम आई सपोज टू डू, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन है मॉडल्स के इस लेक्चर के लिए, वरना अगर 4 हफ्ते होते तो फिर मैं बिल्कुल आपसे बात करता। व्हाट एम आई सपोज टू डू, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मुझे याद है ये जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ाने में मैंने तकरीबन 12 लेक्चर्स होते हैं मेरे, जो बहुत डिटेल्ड होते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक इज अ फास्ट ट्रैक। अब आ जाए एबिलिटी, खत्म, टाटा बाय बाय। मैं आप इसको आपका स्क्रीनशॉट दिला दूं, क्योंकि ये बातें आपको नोट्स में
नहीं मिलेंगी। मैंने आपको बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपनी बातों को सामने रख दिया है, तो आपको ये अच्छी लगेगी। आई एम श्योर दैट यू विल टेक वन स्क्रीनशॉट हेयर। एक मिनट वेट कीजिएगा। सही है भाई। चले, अब एक स्क्रीनशॉट लेके अच्छे बच्चों की तरह इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ऑब्लिगेशन का चैप्टर क्लोज हो गया। जिम्मेदारी, मॉडल्स के ऊपर भी एक किताब है मेरी, वो भी आज आपसे मैं शेयर कर दूंगा। एक टेंसेस के ऊपर भी, एक मॉडल्स के ऊपर भी है। तो उसके अंदर आप तलाश कीजिएगा, जहां जहां आपको शुड नजर आए ऑब्लिगेशन का चैप्टर, उसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अभी हमने ऑब्लिगेशन सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर में पढ़ी। शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो। अब आपके जिंदगी में आ रही है एबिलिटी, सलाहियत। ये आपको परेशान नहीं करेगी। एबिलिटी यानी कि कोई काम जो आप कर सकते हैं, तो ये तो मसला ही नहीं है। कैन, ये तो हम कर सकते हैं। इसका इसका एक और वो भी लिख देता हूं, बी एबल टू। ये इसका मॉडल फ्रेज है, बी एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कैन का पास्ट होता है कुड। आप माजी में कुछ किया, कर सकते थे और आपने बकायदा किया। अच्छा, अब देखिए, इस एक बात याद रखिएगा, कुड के बाद आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां पर भी कैन के बाद आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब हम सलाहियत की बात कर रहे हैं। हम एबिलिटी की बात, हम परमिशन की बात नहीं कर रहे हैं। कैन आई कम इन सर? नहीं नहीं, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? नहीं नहीं बेटा, सर ये भी तो है। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? अभी हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। अभी जाएंगे हम परमिशन में और रिक्वेस्ट में, दोबारा कैन और कुड आएगा। अभी हमारा चैप्टर है एबिलिटी। एबिलिटी के लिए सिर्फ गोरे ने हमें दो मॉडल्स दिए। कैन, कोई सलाहियत जो आपके अंदर है, बहुत सारी सलाहियतें हैं आपके अंदर। सर आई कैन कुक, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, सर आई कैन कुक फूड। कुछ हमारे भाई लोग भी बैठे, सर आई कैन ड्राइव। आई कैन ड्राइव। जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सर आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड योर लेक्चर। आई कैन अंडरस्टैंड योर लेक्चर, मैं आपके लेक्चर को समझ सकता हूं सर। ये आपकी जर्नल एबिलिटीज है। कोई ऐसी सलाहियत जो आपके पास है, जो आप काम कर सकते हैं। सर आई कैन, आई कांट सी इन द डार्क। आई कांट, ये नहीं है ना ability which you don't have. I can't see in the dark, but some animals can see in the dark, right? I can't see in the dark. अच्छा, मैं सलाहियत के बारे में पूछ रहा हूँ, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? ये मैं सलाहियत के ऊपर सवाल कर रहा हूँ। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकती हैं? कैन यू ड्राइव? जब आप किसी की सलाहियत के बारे में पूछते हैं, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन बना सकते हैं। कैन यू ड्राइव? प्लीज, दिस इज माई कार्स की, ड्रॉप मी एट द एयरपोर्ट। श्योर। कैन यू ड्राइव? व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हैं, क्या सलाहियत है आपके अंदर? व्हाट कैन यू डू? व्हाट कैन यू डू फॉर मी? आई कैन मैरी यू? एक्सक्यूज मी, आई एम ऑलरेडी मैरिड। ओके। व्हाट कैन यू डू फॉर मी? अब आ जाए पास्ट, कुड। अच्छा, अब कुड के बारे में देखो, कुड जरा समझना। कुड ऐसा नहीं है कि आप ये बोल देंगे आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। नहीं नहीं, ये पास्ट की मीनिंग्स नहीं दे रहा। अभी तो आपने कहा है कि पास्ट एबिलिटी की बात करेगा, करेगा, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। ये पास्ट एबिलिटी जो आपके पास थी और आपने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसे नहीं। आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, आगे पास्ट का कोई जुमला चिपकाना पड़ेगा। व्हेन आई वॉज इन लंडन, नाउ आई लिव इन Karachi, and there is no environment. I have forgotten everything. I could speak in English when I was in London. I could talk to Sarah. मैं सारा से बातें कर सकता था। I could talk to Sarah for hours, घंटों, when she was unmarried. And I was also unmarried when she was unmarried. अब उसकी शादी हो गई है, उसका शौहर डीएसपी है, मैंने जेल नहीं जाना है। I could talk to Sarah for hours when she was unmarried. मैं घंटों बात किया कर सकता था। ये बाकायदा मेरे पास सबूत मौजूद है, 8-8 घंटे की कॉल पे बात हुई है।
जुमला है बेटा, सीरियस ना ले आप, क्यों टेंशन ले रही है आप? यस, सारा कुड, वी कुड मीट, माजी की कोई सलाहियत, हम मिल सकते थे, वी कुड मीट एट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन अब ऐसा है उसका शोहर छापा मारने, वी कुड मीट एट डिफरेंट प्लेसेस, माजी की कोई सलाहियत जो आपके पास थी आपने उसका इस्तेमाल किया। आई कुड, आई कुड वर्क सुबह 8 बजे से लेकर और रात 8 बजे, 12, और आई कुड वर्क 15 hours a day when I was working। आप देख रहे हैं, आप हर जुमले में मुझे रेफरेंस देना पड़ रहा है पास्ट का। when I was working physically and now I work 24 hours। I could work 15 hours a day, मैं 15 घंटे काम कर सकता था। When I was working physically, I used to leave my home in the after in the morning at 8 o'clock। I used to be a principal of a private college, and I used to come back at around 2 p.m. I just used to have my lunch, offered namaz zohar, and got ready for my next job. Then I used to leave my home at 3 p.m. again, and I used to come back at 10 or 10:30, sometimes 11, mostly at after 10, not before 10. I could work 15 hours a day when I was working physically, but now the life is good. मुझे याद है, इट वॉज अ हीट स्ट्रोक व्हेन वी वर वर्किंग फिजिकली, तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह कोई ऐसा रास्ता दिखा दे, बस घर में मामला हो जाए, बाहर ना निकलना पड़े। तो अल्लाह पाक ने फिर कोविड ही भेज दिया दुनिया भर में। कोविड से हम होम अरेस्ट हो गए, नजरबंद हो गए। चले, वो खत्म भाई, टाटा बाय बाय। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एबिलिटी का प्रेजेंट, एबिलिटी का फ्यूचर, एबिलिटी का पास्ट, सब आ गया आपके सामने, ले लें स्क्रीनशॉट। आगे चलिए, अब आ जाइए पॉसिबिलिटी, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, इसमें थोड़ी बातें ज्यादा होंगी। हमारे पास चार, 1 2 3 4, चार मॉडल्स हैं जो पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं। वो लाजमन तुमको पसंद करती होगी, तुम्हारी तस्वीर अपने पर्स में लेके घूमती है भाई। बाद में पता चला मरवाने के लिए उसने तस्वीर रखी हुई थी, वो ढूंढ रही थी कोई सिपारी लेने से। लेकिन मैंने कहा भाई, यू शी मस्ट लाइक यू, शी मस्ट लाइक यू। अब ये ऑब्लिगेशन वाला मस्ट नहीं है, ये लॉजिक वाला मस्ट है। मैं 95% श्योर हूं कि वो लाजमन ऐसा करती होगी, वो 95%, 95% श्योर। क्यों 95% श्योर हूं? देखें, मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, तस्वीर वाली बात पर डाल दें। शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट यू, राजू 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 राजू, राजू ये राजू वो। शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट यू राजू, शी मस्ट लाइक यू। मैं 95% श्योर हूं। ये है आपकी पॉसिबिलिटी। अभी पॉसिबिलिटी का जो दर्जा है वो 95% है, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो रवानी के साथ इंग्लिश बोलता है। वो लाजमन लैंग्वेज सेंटर जाता होगा, ही मस्ट स्टडी, या पढ़ता होगा, ही मस्ट स्टडी इन एनी लैंग्वेज एकेडमी। ये मैंने लॉजिक अप्लाई की है, ठीक है। ही मस्ट स्टडी इन एनी लैंग्वेज एकेडमी, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। सारा नेवर टॉक्स टू मी, मैंने आपको बताया सारा मुझसे कभी बात ही नहीं करती है। आप 99% श्योर है सर, वो आपको लाजमन पसंद नहीं करती होगी।
ऐसा नहीं है, मैं मान नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता सर। शी कांट लाइक यू। अब देखो मैंने, अब ये सर आपने ये कांट यू लगा दिया, ये क्या बात कर दी आपने। यही तो हमारी बातें हैं, यही हमारी बातें हैं। 99% आप श्योर हैं कि वो ऐसा नहीं, 99% श्योर, 99% श्योर है वो लाजमन आपको पसंद नहीं करती होगी, जब भी तो आपसे बात नहीं करती है। हो सकता है शर्माती हो। नहीं देखिए, शर्माना एक अलग बात होती है और बात ना करना एक अलग चीज होती है सर। शी नेवर, मैंने कहा शी नेवर टॉक्स टू मी, तो आपने रिप्लाई में कहा सर शी कांट लाइक यू। वो लाजमन आपको पसंद नहीं करती होगी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन हर विद राजू। मैंने हमेशा उसको राजू के साथ देखा है, और लाजमन राजू को पसंद करती होगी, शी मस्ट लाइक राजू। अच्छा, अली नेवर स्पीक्स इंग्लिश। अली नेवर स्पीक्स इंग्लिश, अली कभी भी इंग्लिश नहीं बोलता। उसे लाजमन बोलना नहीं आती होगी। अब देखो ये लॉजिक है, तुम एक लॉजिक अप्लाई कर रहे हो, उसे लाजमन बोलना नहीं आती होगी, तो अब तुम कैसे बोलोगे इस बात को। जब तुम लॉजिक अप्लाई करोगे तो अब मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट से नहीं बनेगा, वो कांट से बनेगा। ही कांट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये बातें आपको लैंग्वेज एकेडमी में पढ़ने को मिलती है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। यू कांट नो हाउ टू, ही कांट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सारा लाहौर नहीं जा रही है, सारा इज नॉट गोइंग टू लाहौर। उसे जाना तो था, बट सारा इज नॉट गोइंग टू लाहौर। उसके पास लाजमन पैसे नहीं होंगे। सारा इज नॉट गोइंग टू लाहौर। शी कांट हैव मनी। मस्ट का नेगेटिव याद रहेगा कैसे बनेगा। शी कांट हैव मनी, लाजमन उसके पास पैसे नहीं होंगे। 99% में श्योर हूं। लेकिन अगर आपकी श्योरिटी के दर्जे कम होना शुरू हो जाए, अभी तो आप 95% थे, अगर 50% हो जाए, अगर आपका 30% हो जाए, या फिर लेस देन 30% हो जाए, तो फिर क्या होगा। फिर आपके पास आएगा मे, माइट, कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और अभी इससे पहले आपके पास क्या था, आपके पास मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब था, और उसका नेगेटिव आपने कैसे बनाया, कांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, याद रहेगी मेरी बातें। ये वाला लेक्चर दोबारा सुनना हो तो 7:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, और ताकत के साथ पढ़ाऊंगा। अभी तो रोजे की हालत में हूं, तो ताकत इतनी ज्यादा नहीं लगाइए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैंने काफी ताकत के साथ इस लेक्चर को डिलीवर किया है, कि आपको समझ आई होगी मेरी बातें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आई क्योंकि आपने ये पहली मर्तबा पढ़ी है, तो आज मेरी विनती है, गुजारिश है, तमन्ना है, आरजू है, कहाँ है सर ये सब लोग, मतलब मेरी तमन्ना है, आरजू है, इल्तिजा है कि आप शाम का सेशन भी ले लीजिएगा 7:30 से 8:15। तो ये बातें आपके दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे सब जगह बैठ जाएगी। ठीक है बेटा, और उसके लिए माजरत कि आज मैंने आपसे बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं करवाया, क्योंकि बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी बातें बहुत सारी बाकी है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। अच्छा, अब आपके पास आ गया मे, माइट, कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि शायद आ गया है, शायद ही हो सकता है। 50%। अब आप 50% श्योर है, अगर 50% है तो मे, 50% श्योर, और लेस देन 50%, लेस देन 50%। जब आप 50% श्योर होते हैं या लेस देन 50% श्योर होते हैं, तो आपके पास ये मॉडल वर्ब्स आते हैं। वो शायद, वो शायद तुम्हें जानती हो, शी मे नो यू। वो शायद तुम्हें जानती हो, वो शायद तुम्हें जानती हो। अगर मैं कहूं वो शायद ही तुम्हें जानती हो, कोई मसला ही नहीं है। शी माइट नो यू, शी माइट नो यू। और अगर मैं कहूं वो हो सकता है तुमको जानती हो, माइट से और नीचे चले जाइए, शी कुड, ले सर अभी तो आपने कुड का वो बताया था, वो पास्ट एबिलिटी थी। हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट एबिलिटी है या ये वीक डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है। इसके आगे पीछे कोई जुमला नहीं है, बात खत्म हो गई है। शी कुड नो यू।
और वहां तो मैंने आपको एक शर्त लगा दी थी। क्या शर्त थी? कि लाजमी तौर पर पास्ट टाइम रेफरेंस आएगा। यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। जब भी अब देखो, जब आगे अलग से कोड लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब तो कुछ और ही हो गया। हो सकता है वो तुम्हें जानती हो सकता है वो तुम्हें जानती हो। और देखिएगा, सर हसीब, सर हसीब में ड्राइव। सर हसीब शायद गाड़ी चलाते हो। अब सर हसीब शायद ही गाड़ी चलाते हो, माइट लगा दो, कोई मसला ही नहीं है। मे लगाओ, माइट लगाओ, कुड लगाओ, ये गलती थोड़ी नहीं है। ये तो आपकी डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आपको मे लगाना है, माइट लगाना है या कुड लगाना है। और सर अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहे, बस फिर कुड रिवर्स लगा देते हैं। कुड कहते हैं सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट अवेलेबल इन नेगेटिव। सर हसीब मे नॉट, सर हसीब माइट नॉट, नो सारा। सर हसीब शायद सारा को ना जानते हो, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हर वक्त तो नाम उसी का लेते हैं। सर हसीब मे नॉट नो सारा, माइट नॉट नो सारा। अब लोग कह रहे हैं सारा मे बी हिज वाइफ नेम, लेकिन नहीं, कोई अपनी बेगम के नाम इतना तो नहीं लेता होगा। हाँ सही बात है, कम से कम पढ़ाते वक्त तो नहीं लेंगे, वैसे पूरे दिन लेते हुए तो। शी, सर सी माइट, सारा माइट बी समवन स्पेशल। हो सकता है। अब आप लगाते रहे अंदाजे। 50% श्योर, लेस देन 50% श्योर। अपने पास उर्दू लिखना चाहे तो लिख ले, शायद और शायद। इस मे बी का एक रिप्लेसमेंट भी है। आज की मेरी आखिरी बात, आपने जहां मे लगा रहे हैं, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सबर करो, मे बी लगा लो। अच्छा, मे बी को लगाने के बाद तुमने अभी कल प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है, बस वही लगा दो। देखो, अभी तुमने एक सेंटेंस कहा, ऊपर वाले सेंटेंस को लेकर आते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। वहीं आगे मैं ऐड कर देता हूं, उसको लेकर भी नहीं आते। शी मे नो यू। मैं मे बी से अगर इसको उठा लूं, मे बी साथ लिखा जाएगा और लिख लो अपने पास, मे बी इज एन एडवर्ब। यहां पर मे बी एडवर्ब है। मे बी शी। अब आगे जो तुम जुमला बोलोगे वो टेंस में बोलोगे, मे बी शी नोज यू। वाह, ये तो आसान हो गया सर। मे बी शी नोज यू, शायद वो तुम्हें जानती हो। सर हसीब शायद गाड़ी चलाते हो, ये लो, मे बी। सर हसीब गाड़ी चलाते हैं, सर हसीब ड्राइव्स। प्रेजेंट सिंपल तो आते हैं ना तुम लोगों को, मे बी सर हसीब ड्राइव्स। अच्छा, अगर नेगेटिव होगा सर, लो, मे बी, आगे लगाओ नेगेटिव, सर हसीब डजेंट नो, डजेंट नो सारा। सर हसीब मे नॉट, माइट नॉट नो सारा। मे बी सर हसीब डजेंट नो सारा। यानी कि आप, अगर हम यू सेंटेंस बना रहे हैं, इट रेन्स, एक सेंटेंस आपको आता है, इट रेन्स प्रेजेंट सिंपल, इससे पहले बस मे बी लगा दो, तो मैं मॉडल का रिप्लेसमेंट मिल गया। मैंने कहा है ना, मॉडल्स के बगैर अंग्रेजी बोली जा सकती है, तो ये लो रिप्लेसमेंट, मे बी इट रेन्स। और इसके बाद आपने क्या लगा दिया, अगर मॉडल में लेके जाऊंगा, इट मे रेन। कैसा? एक और देखो, मे बी सारा कुक्स, शायद सारा खाना बनाती हो। मे बी सारा, तो मे बी मिलाकर लिखना, मे बी सारा कुक्स, शायद सारा खाना बनाती है। सारा, अब सारा सुझाव, मे, अब कुक्स मत कर देना, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सारा मे को, सारा शायद खाना बनाती है। अब तुम्हें जो आसान लगे वो इस्तेमाल कर लो। ठीक है, गॉट इट। मे बी, मे इज इक्वल टू मे बी, ये लो, उसकी एक और जुड़वा बहन परहैप्स, एक और जुड़वा बहन प्रोबेबली, प्रोबेबली। आप मेरा प्रोफेशनल कोर्स करें या फास्ट ट्रैक कोर्स करें, मैं जितनी नॉलेज आपको डिलीवर कर रहा हूं ना, इतनी है कि कोई आपको हिला नहीं सकता। ठीक है ना, आपकी नॉलेज बहुत होगी, और उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बस इसको अपनी जबान पर ले आइए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरी किताब बना दी मैंने मॉडल वर्ब्स की आपके सामने। ये आ गया आपके पास पॉसिबिलिटी का चैप्टर।
टाटा बाय बाय, दी एंड, अल्लाह हाफिज। तो और व्हाट अबाउट सर परमिशन, बेटा वो तो मैं करवा चुका हूँ। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में WH वर्ड्स किए थे मेरे साथ। जिसने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया था, वो जाकर उस लेक्चर को एक दफा देख देख ले। मैं याद दिला देता हूँ, मेरा काम याद दिलाना है। मे आई हेल्प यू? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन आ गया याद? लिख रहा हूं मैं ताकि सारी बातें कवर हो जाए इस लेक्चर में। मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इसी बात को आप याद करें। मैंने आपसे दो चीजें और भी बताई थी, कुड और कैन। कुड और कैन। एक नई चीज बता देता हूं, ये लो। वुड यू माइंड इफ आई प्लस पास्ट सिंपल? वुड यू माइंड इफ आई। अब ये क्या है सर? रिप्लेसमेंट है मे आएगा। आपको बुरा ना लगे तो सर मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ पूछे। सर आर यू मैरिड? नहीं नहीं, बिल्कुल आई एम सिंगल बेटा। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड इफ आई। अच्छा अब देखो, इफ आई के बाद पास्ट सिंपल आएगा। वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अब ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, ये बात प्रेजेंट की हो रही है। आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? मे आई सिट नेक्स्ट टू यू? वुड यू माइंड इफ आई सेट नेक्स्ट टू यू? याद आ गई सारी बातें? नहीं आई तो उसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले ले। और रिक्वेस्ट, अब देखो, अब हम मॉडल्स के कुड यू कॉल सारा? क्या आप सारा को बुला सकते हैं? और दूसरा लिखो, कुड यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप जरा एक गिलास पानी पिला सकते हैं? कुड यू फैच मी। फैच का मतलब होता है जाकर लेकर आना। कुड यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर? श्योर। अब मैं इसी जुमले को और किसने अंदाज से बोल सकता हूँ? कुड यू, कैन यू, विल यू, वुड यू। वुड यू, विल यू, कैन यू और कुड यू। इसको कुड रहने दो। सर सब में डिफरेंस क्या है? कुड फ्रेंडली है, बाकी सब विल कॉमनली इन यूज है। वुड और कुड फॉर्मल प्लस पोलाइट है। और जवाब क्या होगा? श्योर, व्हाई नॉट, ग्लैड, आई एम सॉरी। एक नई चीज पढ़ा देता हूँ, वुड यू माइंड। आपको बुरा ना लगे तो एक गिलास पानी ला सकती है? बिल्कुल मैं आपके लिए लाती हूँ। एक मैंने देखो ये अलग स्ट्रक्चर नई चीज दे दी, और एक ये नया, वुड यू माइंड, लेकिन इसके बाद आप क्या लाएंगे? प्लस वर्ब आईएनजी। वुड यू माइंड प्लस वर्ब आईएनजी। वुड यू माइंड प्लस वर्ब आईएनजी, आगे क्वेश्चन मार्क। पोलाइट रिक्वेस्ट होती है ये। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड फेचिंग। अब वर्ब आईएनजी आ जाएगा, फेचिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके पास परमिशन का चैप्टर भी आ गया भाई। मैंने आज जितनी बातें की हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर में की। एक और स्क्रीनशॉट लेना। मैं कोशिश करूंगा इस नोट्स का रिवाइज एडिशन आपको जब फ्राइडे को दूंगा तो उसमें ये सारी बातें ऐड कर दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी बातें मैंने लिख दी है। एक अच्छी किताब बन गई है। ठीक है बेटा। आई एम सॉरी मिस आबिदा, मिस 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 आयशा, मिस फरहा एंड मिस निशा, मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। बस आज मैंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, तो आज आप लोग इनको भरपूर बोलने का मौका दीजिएगा। ठीक है। आई एम साइनिंग ऑफ। आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए, आप लोग क्लिक कीजिएगा, यू विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन। राइट। चलिए। मिस निशा ज्वाइन कीजिएगा, मिस आयशा ज्वाइन कीजिएगा, मिस आबिदा ज्वाइन कीजिएगा, मिस पर अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
अच्छा, मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिया, तो मैं कुछ लोगों को आपके पास फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वेट कीजिएगा, अभी आपके पास स्टूडेंट्स विल बी हेयर। कुछ स्टूडेंट्स डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, वो दोबारा जब ज्वाइन करते हैं तो वो मेन स्ट्रीम पर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं वापस कॉल कर रहा हूँ, सो दे विल बी हेयर इन अ मोमेंट। You may share your screen. You may start. I'm signing off. Thank you, sir. Assalamu alaikum, students. How are you all, students? Alhamdulillah, doing well. How about you, ma'am? Students, I'm pretty well and doing well. Thanks for asking. Okay, yes, students, how's your day today? Alhamdulillah, it's going smooth. Much, that's great. And how's the weather today? It's sunny and pleasant. Yeah, actually, I think so. The weather is getting changed day by day, and it's becoming like hot or warm. Is it Yeah. so? Yes, ma'am. Yeah, I think so. Nowadays, everyone is just organizing their their summer Winter and their clothes. winter clothes as well. Yeah. Yeah. Okay. Okay, students. So start today's class. Today we are gonna start with the models. Okay. Okay. Let me just mute everyone. Okay, students. So today we are gonna do the models, and in the models, the important models we have that are should and must. Okay, so all of you know that must we use for obligations. Actually, both we use for the obligations, but must we use for the mandatory things, for the necessity things. Okay, and as you know that should we use for for advising, for telling someone to do what to do. Okay, so for especially for advising. Okay, so here we have should and must. Okay, and we have the short conversations on these obligations. Okay, so the topic is being a student. Okay, so we have different questions over here, like being a student, what should we do, and being a student, what shouldn't we do, कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. Okay, and being a student, what must we do, कि हमें being a student हमें लाजमन कौन सी चीजें करनी चाहिए. Okay, when we are talking about must, that means that is necessity, like there is no any option. Okay, we don't have any option to do, like either we can go with it or not. No, that means that is mandatory, that is compulsory, you have to do that. Okay, and then we have being a student, what mustn't we do. That is I'm using over here must not, you can, it's up to you. You can use must not or mustn't. I'm using the contraction, so that's why I'm using mustn't. Okay, so yeah, here we have 4 questions. So okay, let me just lower my hand first. Okay, so yes, students, you have to tell that being a student, what should you have to do and what shouldn't you have to do, and what must you have to do and what mustn't you have to do. So obviously here you all are students, so you know very well that exactly what should you have to do and what shouldn't you have to do. So yes, students, you have to make up your minds and you have to raise your hands. Then inshallah, I'll call your name and then you have to unmute yourself. Yes, students, now go ahead and make up your minds, prepare your mind, and then raise your hands. And let's break the ice today. Yeah, go ahead, students. Okay, yes, Miss Afsha. Assalamualaikum, ma'am. Assalam, dear, how are you? I'm suffering from fever and cold, not feeling well. Oh, you are under the weather today. Oh. So did you take any medicine? Have you taken? Ma'am, I have taken, I am fasting. Oh, so in at dawn time, like have you taken any medicine or anything like that?
Ma'am, before Sahar, in Sahar I have taken medicine, but right now the medicine's effect is, I think so, getting finished, and I'm feeling too much nausea like this one. I'm feeling not good, but I want to participate even. Okay, yeah, I got you, dear, obviously. So yeah, you should have self, dear. So here, as I use the word should, the model should, so that means I'm just advising you. Okay, so yeah, and for recommendation you have to go with should. So yes, Miss Aksha, go ahead, dear. Okay, ma'am. What should we do as a student? We should attend our classes regularly. As a student, we should learn lecture regularly. As a student, we should learn our previous lessons regularly, and we should sit in front side, and we should not. And I think so. We should not be a backbenchers. We should not sing in the class. We should not make conversation in the class. We should not talk with each other. And we should listen to teacher very carefully. And we should participate in the class always. Even if you know about the topic, if you know about the topic, that what if you have an outline, then you must see. Then you must see your outline, and and in the class you must participate with the teacher, so that your all um, uh, so that your all objections and your all things will be sorry, all things clear more. And one thing more, that we mustn't mess in the class. We must clean our class, so that our environment will be better, so our environment will be better. And student due to environment, student will have more interest in their lecture, and and they will sit in the class more. Because if the class is, if the class environment is poor, the student should not take participate in the class, and even he will not able to sit in the class. So I think so that student must clean their class. Student must observe the have good, they must have good relationship with each other, and they must have friendship with each other. They must help each other in every difficulty. So these, I think so, these all are the things that a student can make a better person in the world. Okay, that's amazing, dear. That's really you really did really well. Keep it up, dear Aksha. Thank you, ma'am. You're welcome, dear. Okay, move on to Asma Afzali. Yes, Asma. Being a student, what should we do? When we a student, we must attend in the class and participate in all uh, all activity in our class. What shouldn't we do? We don't leave and our class. What must we do? We must work hard and during the class and during the one session of class. What mustn't we do? Uh, uh, we will always in the class and mustn't leave our class. I think it's better and good things being a student. Okay, that's really amazing, dear. You did really well. Keep it up, dear. Okay, students, you can also add like as over here, like the base as a base form of the verb, you can use do over there. Like being a student, we do. Okay, we must do or we should do. Okay, like we should do work hard. We must do work hard. You can use like that as well. Overall, very good, dear. You did really well. Keep it up, dear. Okay, move on to Samra Zulfikar. Yes, ma'am. Dear.
Being a student, we should come on time in class. Uh, and being a student, we shouldn't make noise in a class. Being a student, we must prepare our lecture. And being a student, we mustn't miss our exams. Okay, do you want to add some more points? Yes, Samra, do you want to add some more points, dear? No, ma'am, I think it's okay from my side. Okay, well try, Samra. You did well, dear. Keep it up, dear. Okay, Okay, yes, ma'am. students. Okay, dear. Yes, students, go ahead and raise your hands. Okay, yes, Kuratulen. Being a student, we should be pay attention in our class. Uh, we should pay attention in the class. We should make a good environment in the class. We should clean. We should do clean the not should and clean both are work. We can put in both two words. Only you use only one action verb. Like we should clean. Clean is already a action verb, so Okay. no need. Okay. Yeah. Okay. We should clean the class and we should listen the lecture and we should make a good environment in the class. We should we shouldn't make a noise. Am I right, ma'am? We shouldn't make a noise. Yeah, that's correct here. Okay. We shouldn't make a noise. We shouldn't interrupt the lecturer. We must do attention in the class. We must get together, listen the music, listen to lecture, and we we must we mustn't we mustn't talk during the lecture. We mustn't we must okay, ma'am. That Okay, is my that's it. side because I have a loss of notion in my voice. No, actually, there is no any distortion in your voice. Actually, someone others, like there is one girl who just unmuted herself, so that's why it creates a distortion. Otherwise, there is no distortion in your voice, dear. Okay, ma'am. Okay. But I am Sure. disturbed from the voice. No. It's not from this side, dear. Okay, overall, very good, Kuratulan. You did really well. Okay, let me tell you, dear, like why you are getting confused and why we have to use do or like whenever we have any adjective, okay, or any noun. So at that moment you are supposed to use do. Like for example, we need a base form of the verb after the modals. Okay, like after should or must. So if we have any adjective at that moment, so at that moment you are supposed, according to that, you have to use any verb before that. Okay, as the previous girl she mentioned, like work hard, that means mehanti hona, mehnat karna. So there is no any action verb, so that's why I told her to use do over there. Otherwise, if there is any action verb, so you're not supposed to go to use another verb with that. Okay, got it, dear? Yeah, ma'am. I understand. Okay. Okay. Overall, very good, dear. You did really well and you spoke so well. Okay, yes, students, go ahead and raise your hands. Students, it's your turn to practice because if you're not gonna do the practice, so you will never improve yourself. So yeah, go ahead and raise your hands. Because if I'm gonna listen you, if you're gonna speak and I'm gonna listen you, so at that moment, like I'll got it that where you have problem or where you are facing problem. Yes, students, go ahead and raise your hands. Okay, students, if you're not willing to participate with this slide, so I'm gonna change it. Okay. So let me share the another one.
Okay, students. So now we have a slide that is what should we do? Like being a Pakistani, what should we do? And being a Pakistani, what shouldn't we do? So being a student, what must we do? And being a being a Pakistani, what must we do? And being a Pakistani, what mustn't we do? So yes, students, what are the necessary things that we have to do, and what are that is unnecessary that we don't have to do? So you have to mention over here. So yes, students, go ahead and make up your minds and raise your hands. Okay, yes, Angel. Yes, Angel, dear, unmute yourself. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam, dear. How are you? Am I audible to you? Yes, you are clearly audible to me, dear. Okay. Actually, I was writing some points for the students, what students should do and what students shouldn't do. Yeah, sure, So, dear. Okay, the same slide to you. Okay. Actually, I was calling the names and like I was calling to yeah, everyone. So no, I was yeah. busy in writing some actually some sentences. Students should punctuate. Students should participate extracurricular activities. Students should make their aim to achieve. Students shouldn't behave like an ill-mannered person. Students shouldn't waste their time. Students shouldn't get in any bad activities like tags. Students must work hard to achieve their goal. Students must listen every lecture delivered by their teacher. Students mustn't escape any lecture, and students mustn't grab any opportunity that make them more achievable. Amazing, dear. Very well done. You did really well. Keep it up, dear Angel. Okay, yes, students. Anyone else? Okay, yes, students. Anyone else who are willing to participate for this slide, or should I change? Yes, let me know, students. Yes, if anyone. Yes, ma'am, you can change it. Okay, okay. Let me ask to Hira Jawad, I think so. Yeah, Javed. Yes, Hira Javed, unmute yourself, dear. Yes, ma'am. Miss, may I participate for the students' statement? Okay, you want to go with this with the same slide? Yeah, go ahead, dear. Yeah. You should reach the academy on time. You should listen your teacher. You shouldn't fight with other students. You shouldn't sleep during lectures. You must follow teacher's advice. You must concentrate on maths lecture. You mustn't make noise when principal delivers the speech. Okay, very good, dear. You did really well. But the question is like, what should we do? So the answer will be we Oh, should do this. sorry. Should, okay. So Yes, yes, otherwise, the answers are correct. But the subject that you use, so you have to go with the we. Overall, very good, dear. yes. You did really. Keep it Thank up, you, ma'am. dear. You're welcome, dear. Okay, dear students, I'm going to change the slide now. Okay, let me change. I'm not gonna mention the being a Pakistani. I'm going to share with you guys being a teacher. Okay, maybe some of you students are also a teacher. So you are also like maybe teaching to someone, teaching in a school or university or anything like that. So yeah, let me share this one. So being a teacher, what should we do? Being a teacher, what shouldn't we do? Being a teacher, what must we do? And being a teacher, what mustn't we do? Yes, students, there are a lot of points that you can share over here. It's a really amazing topic today we have, being a teacher. So yeah, students, go ahead and raise your hands. Yes, students, go ahead and raise your hands. Okay, students, it's not necessary that you have to go with the long sentences, like with a paragraph or anything like that. Like whatever point comes in your mind, so you can go with that. At least just give a try. If you're not trying, so you will never improve your spoken. Maybe you guys are feeling unconfident, or you're feeling hesitation, anything like that. So you're not supposed to do like that. If you're doing like that, so you will never improve your spoken. Okay. So okay, let me give chance to Afsha. Yes, Afsha, unmute yourself, dear. Yes, ma'am. Yes.
Ma'am, as a teacher, we should prepare our lecture well. We should consult our lecture with all the authentic resources. We should write note before delivering a lecture. We should have ability. We should have a spoken ability and so that student can attract towards you more. Our we should learn lecture as much as so that there will be no gap and the student cannot stuck in the lecture and they cannot create mess during the lecture. We should take attendance regularly so that we should know which student is more regular in the class. We should always focus on the backbenchers. Sometimes backbenchers need more attraction. So when teacher give more attraction towards the backbencher, they can get highest marks. So I think so it must be good for a teacher that he must listen to the backbenchers. He must listen everyday lesson to his the everyday previous lesson to he must listen previous lesson to from the class and he must make groups. He must make groups of class so that if there is any difficulty in the lecture, so that student can also make it clear by describing it in a group and by discussing it in a group. And and very more foremost thing is that student always give assignments to assign students. The teacher must assign assignments to the students related to their topic. They mustn't assign different topic that are not related to their subject, so that student can ponder of their subject beautifully, and they can clarify and describe their subject more beautifully, and they can get highest marks. And teacher mustn't be stuck too much stick in the class. He must show his he must show affection, love, and honesty towards giving marks and every behavior. Thank you. You welcome, Miss Aksha. You did really well, dear. Very well done. Keep it up, dear. It seems like you are a teacher. Have you worked anywhere as a teacher? Yes, ma'am. I am working as a teacher in Comsat University. I am teaching Islamic studies subject in English as well. I can deliver it in English as well as in Urdu, but in Islamic studies, three languages we are using, and sometimes we are struck that we have to deliver our lecture in English. So that's why I know each and everything very clearly, that how teachers can cope up with their towards their students. So that's why I am elaborating all those things. But you know that I had hit an accident. So due to that accident, I have taken 6 month leave from my university. So right now I am only interesting toward the learning English language as well as so that too much so that I can deliver my lecture in a beautiful way when I again join my university, inshallah. Okay, inshallah, dear. That's really amazing to listen you, Miss Aksha. You did really well and you spoke so well, dear. Keep it up, dear. You are improving yourself. Seriously, I really appreciate you. Thank you, ma'am. You're welcome, dear. Okay, move on to Miss Aisha. Yes, Aisha, unmute yourself, dear. Yes. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum assalam, dear. Yes, dear. Yes. Okay. Ma'am, I just joined 1 minute before. Actually, you raised your hand, so that's why I call your name. So yeah, no problem. Let me give the chance to Anjum, No, then no, I'll be ma'am. back. Okay. Okay. Hello, Yeah. Assalamualaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam, Anjum. I'm great, dear. How are you? Ma'am, I'm good. Alhamdulillah. Okay, I Mashallah. would like to start my topic.
what should we do being a teacher? Being a teacher. Yeah, Okay. exactly. You have these 4 questions. Okay. Yeah. Yeah, ma'am. We should get up early in the morning. We should take our breakfast. We should wear a neat dress. We should follow the college rules. We should attend our class. And second question is we should not we do what should not we do, so that the teacher should not be miss our lectures. The teacher should not be misbehave with students. The teacher should not be to be very frank with students. The teacher should not be abused to the students. um, the and the third question is, what must we do, so that the teacher must obey, the teacher must attend the class, the teacher must arrive school on time, the teacher must be giving the proper instructions, the teacher must give the proper instructions to the students in the examination hall. And fourth question is, what mustn't we do? The teacher must not be abused to the abused to the students. The teacher must not be the teacher must not be misbehave with the students. The teacher must not be aggressive to our students. That's all right from me. That's great, Anjum. You did really well. Keep it up, dear. You did really well. Thank you. Okay. Okay. Now here I want to tell you, like some of the students they are using without contraction. Like with contraction, there is a different way to use the question to make the question, and without contraction, there is different way to make the question. For example, what shouldn't we do with contraction? And without contraction, what we have to do? We have to use the not after the subject. What should we not do? Okay, what should What we should do? Okay, we do? with Okay. contraction, we're supposed to use not after the subject. Okay, students, getting my point? Actually, that is the difference between the contraction and without contraction with all the helping verbs or models. Okay, if we're gonna talk about don't, if we don't I, so if you're gonna go with without contraction, so you will go with do I not. Okay, getting my points? In question, in interrogative, how you have to make the question with without contraction and with contraction. Is that clear to everyone? Same like that, what must we not do? And with contraction, what mustn't we do? Okay, students? I hope that's clear to all of you. Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, overall, very good, Anjum. You did really well. Okay, move on to Aisha. Yes, Aisha, are you ready now? Yes, Aisha, are you good to go now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm Yeah, audible. go. Am Okay, I dear, go audible, ahead. ma'am? Yes, you are, dear. Okay, being a teacher, what should we do? Okay, what should we do? We should attend our class on time, or we should teach a student very honestly. We should talk with student politely. Okay, if I talk about should not, we should not. Um, we should not behave rudely with students. We should not use bad word. Uh, I okay. What should okay? We must. Ma'am, I'm not ready. I just joined now. Sorry for that. Okay, it's okay, dear. Whatever comes in your mind, go ahead with that. It's okay. Okay, we should not.
we should not, what would we say the word? Um, The teacher should not be personal to the students, you can say. Yeah, okay. Okay, overall good try, Miss Aisha. You did really well. Keep it up, dear. okay, ma'am. Okay. Okay, yes, students, anyone else who want to go with the same slide? Yes, anyone? Okay, yes, Hira Javed is there. Yes, Hira. Yes, ma'am. Being a teacher, we should listen to every student. We should be fluent in English, and we shouldn't give attention to a single student. We shouldn't give lots of homework on vacations. We must follow the timetable. We must give extra knowledge to the students. We mustn't share our personal details with any student. We mustn't do student discrimination. Amazing, dear. Very well done, Hira. You did really well. Thank you. Keep it up, dear. Thank you, ma'am. You are yes, Miss Farhat. Unmute yourself. Okay, ma'am. Being a teacher, what should we do? We should attend lecture regularly. We should teach students with all our heart and help them as much as we can. We should not focus on few students in the class and leave the rest. We must take care of all the students in the class. We mustn't ignore a student needs or concerns they have. And that's it, ma'am. Amazing, dear. Very good. Keep it up, dear. Okay, move on to Angel. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Yes. Okay. Being a teacher, we should deliver our lecture in such a way that every student must take part and can understand easily. We should punctual so that not a single class can suffer. We must assign a task to every student so that every student must take part in every activity. We must not unfair to any class so that the student must not feel let down. Very good, and Angel. You did really well. So well, dear. Very well done. Okay, students. So I'm going to change the slide. Okay. Okay, students, now let's see, we have a mini presentation on obligations. Okay, again, we have the same structure, the same formation, should and must. After that, we have to use the base form of the verb. Okay, so what should parents do for kids? What should teachers do for students? What should friends do for friends? What should we do as a Muslim? What should we do as a human being? What should police do for public? What should kids do for parents? And what should people do for good future? Okay, students, so these are the questions, so it's up to you. So go ahead and at least choose any three topics, like three questions. It's up to you. Okay, I'm just giving you a like a favorite to just choose three topics from these questions, and just go ahead with that. Yeah, it's up to you, students. I'm just making convenient for you to at least you just participate. Okay, so that's why. Yeah. Yes, students, today you guys have a chance to speak as much as you can. Okay, should I call your names, students? Let me ask one question from all of you. Okay, different questions. Okay, let me call. Yes, Iram. Iram, would you please unmute yourself? Yes, Iram. Assalamualaikum. Yes, ma'am. Walaikum assalam. How are you? I'm pretty good. Thanks for asking. How are you, ma'am?
Alhamdulillah, dear, I'm good too. Thanks for asking. Okay, dear, first of all, tell me, are you doing any job? Not right now. I'm just doing online. Okay, so are you a housewife? Yeah, I'm a housewife, but not actually. I just take a gap for my daily routine. I am a physiotherapist and I am doing my clinic on daily basis. But right now, because of the postpartum situation, I just take a break for 3 months. Oh, okay, so let me ask according to that, like a question to you. Okay, so what should we do as a human being? I think so that will be What should we do as a human being? I think the yeah. most important quality we must have to adapt ourselves is to helping others. I think that is the ability or the quality that makes a difference from animals to the humans. We must have to help to one another and make or create ease in our lives. Exactly, that's true. Okay, very well tried, dear. Thanks for participating. Keep it up, dear. Thank you, ma'am. You're welcome, dear. Okay, let me call another participant's name. Mm, okay. Yes, Anjum Khan. Yes, Anjum Khan. Unmute yourself, dear. Yes, ma'am. Oh, Okay. Ma'am, I what would like to give the first question, answer of the first question. What should the parents do for kids? I think that yeah, the parents should give a good name of their child, first of all, and the parents should teach in a good school, and the parents should give all the Islamic um, education to their child, and the parents should be give the better good the parents should be good behave to their kids. And the second question is that what should the teacher do for the students? And my answer is the teacher should give a competitive environment in the class. The teacher should be teach with a proper manner. The teacher should attend all the classes. The teacher should regular in the class, and the teacher should not be much rude behavior to their child. And the third question is, what should we do as a Muslim? So that I think that as a Muslim, we should follow the all Islamic rules, and we should recite the Holy Quran and offer prayers. And the second thing is that I think this is the much important for all the Muslims, that we recite the Holy Quran with translation and the tafsir also, so that when we read the Quran Pak with their translation, then we are able to understand what is the rules and what is the instructions that Allah gave us, and we should always thankful for the God, and I think that's enough for me from me. okay, that's really amazing, Anjum. You explain in a very well way, dear. Very well done. Keep it up, dear. Thank you, ma'am. You're welcome, dear. Okay, yes, Saima Riaz. Saima Riaz, would you like to participate, dear? Yes, Saima. Okay, let me call Sehrish. Yes, Sehrish, would you like to participate, dear? Yes, ma'am. What should we do? We should answer these questions. Yeah, it's up to you. You just have to choose any 2 or 3 questions, dear. Okay. What should parents do for kids? Parents should love, give support to their kids, and they should give confidence to their kids, and also they should teach them to behave nicely and respectfully,
And next question is, what should teachers do for students? Teachers give equality to all the students in the class. Teachers give chance to every student to participate in curricular or extracurricular activities. And also teachers are the role model for the students. So if they are good, the students will also be good. And number third question is, what should kids do for parents? Kids respect their parents and they obey their parents. They should take care of their parents as their parents do. And kids should have the sense that how parents give sacrifices for their upbringing. So they should feel that the love and that feeling. That's all. Okay, that's amazing, dear. That's really great to listen, Sehrish. You did really well. Keep it up, dear. Thank you so much. Welcome, dear. You're welcome. Okay, yes, students, go ahead and raise your hands. Okay, so yes, Aisha Khan, would you like to participate, dear? Yes, Aisha Khan. Okay, yes, Angel. Okay, Yes, students, ma'am. go. Just give me some minutes. I'm writing the few topics Okay, okay, no because problem. before Yeah. before speaking, I have to. Okay, got it, dear. Okay, yes, Angel. Hello, am I audible? Okay, yes, you are. Okay, students, so let it call a day. It's okay, right now you guys have one-to-one discussion. So inshallah, see you tomorrow. So take care and Allah Hafiz, students. Allah Hafiz, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. Welcome back. Now, today you have one-to-one discussion session, and in this session, two participants talk to each other. And I have shared your screen, and I'm just sending you in one-to-one session.